A very good morning, students. So, students, today I'm teaching you how to make Rakhi at your home. So, let's get started. Firstly, we'll need a thread. We'll need one thread to hold our Rakhi. Just place it here. Now, divide this thread into part. Now, divide your Rakhi into two parts because we'll have to know the center. This is my center. So, open it. Now, we'll need a leaf and we'll need a paper. We'll need a leaf or we'll need a paper. So hold your leaf into the center and just turn out the thread. Now paste your paper into the thread. While we'll paste this paper into the thread, because we'll have to give it some base, ताकि जो हमारी राखी है, जो धागा है वो राखी से अलग ना हो. So we'll need to give our Rakhi some base. Okay, class? Now turn it. Now we'll make swastik here. आपको क्या लेना है ये देखो बेटा. I'll take some चावल. चावलों को मैंने सिंदूर रंग में रंग दिया है. जैसे जो सिंदूर होता है ना, मम्मा के पास होगा आपके घर में, तो चावलों को आप सिंदूर रंग में रंग देना. ठीक है, तो वो ऐसे रेड कलर के हो जाएंगे. अब हमें स्वास्तिक बनाना है यहाँ पे. ठीक है, अब हम स्वास्तिक कैसे बनाएंगे. आपको जो चावल है उस पर हल्का सा गम लगाना है. हल्का सा गम लगाना है आपने. ठीक है, एंड जस्ट पेस्ट इट हियर. पेस्ट हियर. ओके, डायरेक्टली मत लगाना इसको, बिकॉज डायरेक्टली गम जो है वो ज़्यादा भी लग सकता है और फिर थोड़े गम के ना आपके वहाँ पे गम लग जाएगा लीफ पे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट. I hope you like that Rakhi, and please make it with help of your mother or your father. This it. Now here. So we'll complete our first 50% step. Now from the another side. Take little bit gum. Firstly we'll apply in center, ताकि ना हमें सेंटर पता चल जाए अपना. ठीक है, अभी हम यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे. Firstly we'll apply in center because we have to know about center na, that's why. Now another center. Easy thing this is. If you try this one na, then you can make this Rakhi into 10 to 15 minutes maximum. Center, my center.
बिकॉज अब हमें सेंटर का पता चल चुका है. देन विल कंप्लीट आर स्वस्तिक. फर्स्टली जस्ट push this one. Yes, right. Now complete your swastik from the upper side. Yes. Okay. This rice needs some gum more. From the upper side, we'll apply first. And now from the downside. Now from the downside, we'll apply. And now our swastik is complete. How was it? Now our swastik is complete. See? Now we'll need some pulse. And just put pearls in the middle and the upper and down side. इस पे भी मैंने सेम ही चीज़ की है. मैंने पहले पर्ल पे गम लगाया और उसके बाद उसको डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट किया. पर आप ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो. जैसे कि ये देखो, ये सेंटर है. मैंने अब यहाँ पे गम लगाया और फिर उसके बाद अपनी जो पर्ल्स है उसको यहाँ पे अटैच किया. जैसे आपको सही लगे, इजी लगे. एंड नाउ from the upper side. Yeah. Okay. Done. Now we'll need 4 elaichis which we used in Rakhi. So the first one is, we'll apply first one into this corner. Okay. And the second one will apply into the similar way into that one corner. And now next one will apply into this corner, and the last one similarly will apply, okay, into that one corner. So how was it, class? This is my Rakhi which I made with those things which really available in my home. ये सब चीज़ें मेरे घर पे easily available हैं, तो मैंने इन चीज़ों से राखी बनाई है. Hope you guys like it, and please try this Rakhi at your home and send me your pics also. Thank you very much, class.